This is Amit and you all are right now at Dharate. So today we are going to deal with the problem always being asked in CBSE. This type of problem is always preferred in CBSE exams. So the question is, so that one and only out of n plus 1, n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. सो इस तरह क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई में पूछा जाता है. ये खुद एक सीबीएसई 2008 के पेपर का क्वेश्चन है. सो आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या फिर बोलिए तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम वाले थ्योरम से पूछा जाता है. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ n plus 1 n plus 4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो पहले तो बात कर लेते हैं कि सिर्फ ये सारे डिजिट्स डिविजिबल होंगे 3 से, ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव नंबर. तो n जिनमें कोई एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब n कोई पॉजिटिव नंबर है जिसमें n plus 1 n plus 2 और n plus 4 वाले डिजिट हैं 3 से डिविजिबल होंगे. तो ये हमें प्रूव करना है या फिर दिखाना है इस चीज़ को कि किस तरह से होंगे. तो यहाँ पर क्या है, 3 डिवाइज़र होगा और n मेरा डिविडेंट होगा. इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम वी नो वी कैन सेट ऑन डिवाइडिंग n बाई 3. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n को 3 से डिवाइड कर रहे हैं. लेट q बी द क्वोशेंट, जो आएगा वो क्वोशेंट, मतलब कितने बार में घट रहा है तो वो क्वोशेंट, और r बी द रिमाइंडर. तो उस हिसाब से मेरा इस तरह का कुछ बनता है. मतलब n जो डिविडेंट मस्ट बी इक्वल टू 3 डिवाइजर इंटू क्वोशेंट plus r where r must be smaller greater than or equal to 0 and smaller than divisor that is 3, मगर 3 से छोटा होना चाहिए r. ठीक है, तो इस केस में क्या है कि n is equals to 3q plus r where r is equals to 0 1 2 and so on. ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 केस लेंगे. तो when n is equals to 3q, ओके, व्हेन n इक्वल्स टू 3q, कब, जब r मेरा 0 होगा. नेक्स्ट टाइम क्या है, n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, कब, जब मेरा r 1 होगा. उसी तरह से n इक्वल्स टू 3q प्लस 2, जब मेरा r 2 होगा. तो यहाँ पे 3 केसेस मैं लूँगा. तो फर्स्ट केस क्या है, केस 1. केस 1 क्या है कि इफ़ n is equal to 3q, when n equals to 3q, r is equals to 0, so the one n is totally divisible by 3. So we can write then n is divisible by 3, divisible by 3, and so on. Now proceeding through case 2. So when case 2, if n is equals to 3q plus 1, when n is 3q plus 1, then what is going to happen? So this is not divisible by 3 because here we are getting one remainder as remainder. So when we are getting some remainder, then the dividend is not totally divisible by the divisor. So here we are getting remainder. So here it is not totally divisible by 3. So then in this case, then n plus 2, then n plus 2 is equals to what? N plus 2 is equals to, so here see there is n, so n is this much and we are adding 2. तो इतना n पहले से था और इसमें फिर से हम 2 ऐड कर दे रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 3q. ये तो वेरिएबल के साथ है, इसमें ऐड होगा नहीं. 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये टोटली 3 से डिविजिबल हो, हम किसी तरह भी इसको 3 से डिविजिबल बना पाए. सो ये करने का प्रोविज़न हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है. सो n प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन 3 ले सकते हैं. तो 3 को कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, q प्लस 1 एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट एनी रिमाइंडर. सो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 है. सो which so n plus 2 is equals to 3q 3 bracket q plus 1 which is
divisible by 3. Okay, so in this case it is divisible by 3. Now we are coming to case third. Here, if n is equals to 3 cube plus 2, so here also this is not totally divisible by 3 because here we are getting some remainder. So to make it totally divisible by 3, we have to manipulate it so that it get totally divisible by 3. So let us take n plus 4. So अब क्या है यहाँ n तो ऑलरेडी ये है 3 क्यू प्लस 2, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 6. अब क्या है कि n प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं तो q प्लस 2 एंड नथिंग रिमाइंडर इज लेफ्ट. सो नाउ it is divisible by 3. So in these all three cases I have shown that how we can make it divisible by 3. Now so we can write, so one and only one, so we can write 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3. So we can right now we can write that only 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3. So this was all about this question. So this is the way you have to solve these all questions. Thank you. If the relevant video is really helpful, do like, share, subscribe and share with your friends, and please press the bell icon so you can be updated by the new arrival of any videos. Thank you.